in English, in Hindi, and also in Marathi. He works as a professor in Gautam Buddha University, Noida, and teaches Buddhism, teaches Ambedkar thoughts, teaches meditation. We are very fortunate to have him in our Urgyen Sangharakshita International School. And you all are very fortunate to have a word with him. Let us again give him a big hand, Dr. Manjukumar. I want him to speak few words with you. Thank you very much. Happy New Year. Thank you. So, I am very much happy to hear in this beautiful school which is named on Urgyen Sangharakshita, who is my teacher. So teacher, his role in our life is very important. Do you know teacher? Who is your class teacher? Okay. So teacher is guide to us. What they guide? They guide about the life, about the different kind of the subject, like maths, English, science, and many other subjects. They introduce the different kind of the subject. How to we understand and how to practice in our life. And that's why in education, where we are taking education here from very child, when I was student, where I was study in same age like you, so such kind of facility I couldn't get. Like beautiful campus, beautiful teachers, beautiful this what you wear the dresses. So I was remembering that days when I looking all of you. Your face very beautiful, smiling, happy. But I don't remember such face I was in that time. But I spent very good time, like as a children's child and student. I was study in a school name of Dr. Ambedkar, Prathmik Shala, very beginning education. And then I study in a school, then college, then university, that Nagpur University. When I was very young, I was introduced meditation. I know, and you also very much know about Dr. Ambedkar, Lord Buddha, and his teaching, which teaching show or help us to understand our own life, especially what we are taking education. So education is the energy, like the food. We're taking food every day, morning, afternoon, and evening, because we need energy to survive this body. But what about the mind? Without mind, we cannot become good student like you, like me, or many of us, like your principal, your teachers, your parents. And very important, who is the inspired to education, that name we know Dr. Ambedkar, who called Bodhisattva,
who call architecture of India, who call educationalist, who call social reformer, who call bodhisattva. So this different name of Dr. Ambedkar. And I very much inspired from Dr. Ambedkar. When I was as you, as student, as a young, my father was the very inspired teacher to me. He inspired the life of Dr. Ambedkar. How he took education in very difficult situation. We know his life, how he struggled in his life of taking education. That many stories when he was going to school like you, but he not allowed to sit together to other students. He will not get drinking water. But what about you? You all are the equal in this school. Why? Why taking education, water, everything as a human being? Because of Dr. Ambedkar. What he had experienced in his childhood life or after his young life or entered his life because of caste system. What you pray Dr. Ambedkar's song in this assembly. Why? The song is give the energy of Dr. Ambedkar, energy of his thoughts, energy of his action. We should think like Dr. Ambedkar. Why? Because we know the importance of life. Those who understand the importance of life, I am very much happy when I listening from the student in this stage, their skills, their confidence, their understanding, their motivation to how to speak, how to stand in front of the people. And this is the very important result what you are getting here from the school. The school, education and teacher, and very important, all of you as a student. But when you're talking about the student, is very important role. Do you understand your body? Do you know your body? Yes or no? So what kind of the parts of body? Your hand, your legs, stomach, head, and many, I think hundreds of parts of body. But do you know what is important parts in your body? Yeah, mind, heart and lungs. So when you're talking about the mind, when you're talking about the body, so both elements is very important. When do you understand what you are as a student, as a human being? Mostly we're thinking about just body. But when you see the peoples, those who become great on this planet, like Buddha, like Dr. Ambedkar, like a scientist or whatever social reformer, Savitribai Phule, Jyotiba Phule, or many. The same people like you and like me, how the people become great. They understood the importance of body. They work by the body. They act by the body. But in that his life, he understood the importance of mind. Without importance of mind, cultivation of the mind, no one can become excellent student. If you want to excellent, you have to think about importance of mind. So that's the important
cultivation in the schools. Not just for you gather here and sitting together and just you have to study what you have text syllabus. That is not the real importance of education or school. The cultivation of the mind. Transform the mind day by day. You are coming from many long days here, 2 years, 3 years. So each day, each month, each year, your mind should be cultivated. You have to observe your mind in different angles, different aspects, like your attitudes, how you to think about your life, about your subject, about your purpose in life. Your life is very important. You are the citizen of this India nation. You think in all aspects, not only for yourself. Just do study and exam and do the pass. It's not the meaning of education when you're talking about the smart student. If you want to become smart student, good human being like Dr. Ambedkar, so you have to think the importance of education in all aspects, not only for getting the certificate, or even I'm requesting to all teachers. The teachers is very important role to cultivate the student's mind. They are the trainer, how they think and how they teach, because students don't know how they train themselves. And that's why teacher's role is very important. In Dr. Ambedkar's life, his father was the first teacher, where his father took too much care of Dr. Ambedkar, Bhimrao, to go school and study, and not the study only the text of syllabus, but many other books he brought to Dr. Ambedkar to read, like a life of great persons and many others biographies. And that was the energy of Dr. Ambedkar's life. He became the great person in India, not only in India, but in the world. So that capacity in all of you. So this is the day, this is the real Happy New Year, to look yourself, to understand the importance of the mind, and to do some short meditation. Meditation is the tool which taught by the Lord Buddha, or even Dr. Ambedkar had the great, deep, the power of concentration. When he was studying 18 hours, 18 to 20 hours in a day. So that is the power of the concentration. That is the power of the meditation. So we took the inspiration from Dr. Ambedkar, how to do study with concentration. So concentration is the role of the mind. Concentration, it will be improved by the meditation, which taught by Lord Buddha. Anapanasati, awareness of breathing. We are always taking breath in and breathe out, but we don't observe it. If you're observing, you become more concentrated. It's my own experience. I learned this meditation when I was age of 20, very young. And since that I start to use that meditation techniques to improve my study. And after that I continue meditation nowadays. So it's a very, very excellent tools which came from Buddha. And we know the life of the Buddha when we know life of ourselves. Buddha is not in statue. Buddha is within your heart, within your action, within your thought. You look yourself. Self-help, Atta Deepa Bhava.
what Buddha says and what Dr. Ambedkar says. To look yourself. So that is the way to look our all aspects in our day-to-day life as a student, and same time very important role of our all teachers, those who cultivate their mind, and not only the teachers but their parents also is very important role to motivate their good education in this life. Lastly, I would like to share very small story in Hindi, and then I will be stop my some kind of inspiration speech. तो स्टोरी किसको पसंद है? चलो ठीक है। मैं भी छोटा था तब मुझे भी मेरे पिताजी काफ़ी अच्छी स्टोरीज बताते थे। कुछ स्टोरी बुद्ध के लाइफ से होती थी, कुछ बाबा साहब के लाइफ से, और हर स्टोरी कुछ ना कुछ हमें ऐसा मैसेज देती है कि जिस मैसेज से हम अपने लाइफ को मोटिवेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, और उसके साथ में हम जीने की कोशिश करते हैं। स्टोरी ऐसी है, एक राजा होता है और राजा रोज़ अपने जीवन में आनंदित होता है। एक दिन बहुत वो बोर होने लगता है, उसको लगता है कि कुछ तो भी जीवन में, लाइफ में मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, हैप्पीनेस उससे, उसके लाइफ से निकल जाती है। तो वो अपने मंत्री को बोलता है कि ऐसा कुछ करो जिससे मुझे आनंद मिले, ऐसा कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो जिससे मैं खुशी का अनुभव कर सकूं। तो मंत्री एक बहुत बड़ी सभा आयोजित करता है, जिस प्रकार से असेंबली हम आयोजित करते हैं, और बहुत सारे लोग आते हैं, और उसमें बीच में एक बड़ा हाथी रखा जाता है, और उस हाथी के आसपास जो उसके जो हाथी के जो पार्ट्स ऑफ बॉडी जो होते हैं, हर बॉडी के पास में एक एक अंधे को रखा जाता है। एक पैर के पास में एक अंधे व्यक्ति को रखा जाता है, एक सूंड के पास में रखा जाता है, एक उसका कान होता है उसके पास रखा जाता है, एक पीठ होती है उसके पास में रखा जाता है, एक पूंछ होती है उसके पास में रखा जाता है। आप लोगों ने हाथी को देखा? गुड। अगर नहीं भी देखा होगा तो आप चित्र में ज़रूर देखा होगा, जू में गए होंगे या फिर सर्कस में देखा होगा आप लोगों ने। तो आप सोचिए कि ये हाथी है आपके सामने, और ये 5 अंधे हैं, जो जन्म से ही अंधे हैं। उसने कभी किसी चीज़ को या हाथी को, किसी भी चीज़ को उसने देखा नहीं है। और मंत्री बोलता है उस 5 अंधे को कि अभी आप ये हाथी जो है, ये बताओ कि कैसे दिखता है। और राजा अपने स्टेज पे बैठा रहता है, सब प्रजा बैठी रहती है, बीच में हाथी होता है, और ये 5 अंधे, ये 5 हिस्से जो थे हाथी के, उसके पास में उसको वो छूता है, क्योंकि उसकी आंखें नहीं होती है, इसलिए वो स्पर्श से जानने की कोशिश करता है कि हाथी कैसे होता है। तो 5 जो अंधे जो है अलग अलग पार्ट्स के हाथी के हिस्से को टच करते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं, और जानकर वो अपना मत जो है हाथी के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। तो जैसे जो सूंड को पकड़ा हुआ जो व्यक्ति जो होता है, अंधा व्यक्ति, वो बोलता है कि हाथी जो है वो बड़े रस्सी के जैसा है। फिर जो पैर को पकड़ा हुआ जो अंधा होता है, वो कहता है कि वो किसी बाम्बू के जैसा है। जो पूंछ को पकड़ा हुआ रहता है, वो बोलता है कि कोई पतली रस्सी के जैसा हाथी है, क्योंकि उतना ही उसने उसको महसूस किया है, और वैसा ही वो सोच रहा है कि वैसा ही हाथी होगा। जो कान को पकड़ता है तो बोलता है कि सूप जो होता है उसके जैसा है, कोई बर्तन है उसके जैसा है। और जो पीठ पे जो बैठा रहता है वो बोलता है कि बड़े बर्तन जैसा है। तो ये 5 जो हाथी को छूने वाले 5 अंधे जो है, वो जब अपने मत को एक दूसरे को बताते हैं कि हाथी ऐसा है, और इतना ही नहीं बल्कि वो एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच है, मैं जो बोल रहा हूं वो सच है, जबकि वो सभी 5 के 5 अंधे होते हैं और अपने मत के लिए वो लड़ते हैं। और जब ये लड़ते हैं अंधे लोग, तब राजा देख के बड़ा उसको हंसी आती है, लोग भी हंसने लगते हैं।
जबकि वो अंधे हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि हाथी ऐसा ही है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से लड़ते हैं। तो इस कहानी से ये बात हमें पता चलती है कि यहाँ पे जो अंधे जो है वो लोग हैं कि जो जिंदगी को या शिक्षा को या किसी भी चीज़ को एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर आप भी अपनी शिक्षा को अगर एक ही दृष्टिकोण से देख रहे हैं, हाँ, कि पढ़ाई करो, एग्ज़ाम दो और डिग्री लो, वो एक अंधे का दृष्टिकोण है। ऐसी पढ़ाई लेने से आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। और देखिए, जो हमारे पहले लिए हुए जो लोग ऐसे एजुकेटेड है, वो किसी काम के नहीं हैं। फिर आपके भाई हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके अड़ोस पड़ोसी हो सकते हैं, किसी काम के नहीं है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा लेके वो अंधे के जैसा है, ये शिक्षा को एक उद्देश्य से उसको समझ लिया है। लेकिन जो राजा जो है, जिसके पास में आंखें हैं, वो हाथी को पूरे स्वरूप में देखता है। तो हाथी जो है वो एक हमारे अस्तित्व का प्रतीक है। जिंदगी कैसी है? हाथी की तरह है। सभी पहलुओं को हमें देखना है। हमारी पढ़ाई सभी पहलुओं से हमें करनी है। हमारा शरीर भी अच्छा होना चाहिए, शरीर का स्वास्थ्य रखना चाहिए, हाँ, डिसिप्लिन रखनी चाहिए, हाइजीन को हमने इंपॉर्टेंट देना चाहिए, साथ साथ में माइंड को इंपॉर्टेंट देना चाहिए, हमारे थॉट्स को, एटीट्यूड्स को, बिहेवियर्स को, हाँ, हम पंचशील का पालन करना चाहिए, हमारे व्यवहार अच्छे होने चाहिए, हमारा मन का कंसंट्रेशन है, मेमोरी पावर अच्छा होना चाहिए। और पढ़ाई के साथ में हमने अपने पढ़ाई का जो वैल्यू जो है वो सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि समाज के लिए है, ऐसा सोच के हमने पढ़ना चाहिए। ये मेरी पढ़ाई जो मैं पढ़ूंगा या जो मुझे पैसा मिलेगा, जो मुझे पद मिलेगा, ये सिर्फ मेरे परिवार के लिए नहीं है, बल्कि ये समाज की भी उतनी ही इसमें हिस्सेदारी है। ये बात बाबा साहब को अगर उनके पिताजी नहीं बताते तो आज हम यहाँ पे बैठे हुए नहीं होते। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स यही भूल चुके हैं अपने बच्चों को पढ़ाते समय। हमारे टीचर्स, हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है ये भूल चुकी है कि बच्चों को इसका मैसेज उनके कानों तक, उनके दिलों तक, उनके मन तक नहीं जाता है, तो बच्चा भी वही सोचता है जो उनको सुनाया जाता है, जो बताया जाता है। हमारी थोड़ी सी भूल हो रही है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। हम अच्छा उसको स्टूडेंट बनाते हैं, अच्छा हम वर्कर बनाते हैं, अच्छा हम पद पे ले जाते हैं, लेकिन अच्छा इंसान जब तक वो अच्छा स्टूडेंट, अच्छा वर्कर, अच्छा पद पे जाने वाला नहीं बनेगा, तो समाज की दशा जो है, जो हम 60 साल के बाद में देख रहे हैं, तो आने वाले 60 साल के बाद उससे भी नीचे जाने की पूरी संभावना है। लेकिन ऊंचा उठ सकता है अगर हम अपने बच्चों को, विद्यार्थी को शिक्षा के माध्यम से हम उसको एक सच्चा इंसान बनाने का जो मूल्य जो है, इस कहानी से हमें मिलता है कि राजा जो होता है वो बुद्ध होता है, वो बोधिसत्व होता है, वो अच्छा स्टूडेंट होता है, अच्छा टीचर होता है, कि जो सभी पहलुओं को देखते हुए उस कार्य को करता है या उस शिक्षा को आगे बढ़ाता है। बाबा साहब का आखिरी सेंटेंस कह के मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा। बाबा साहब कहते हैं, शिक्षा वह है, शेरनी का दूध है, हाँ, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दहाड़ने का मतलब क्या है? अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से विकसित करना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज, देश और इस संसार के लिए। जैसे बाबा साहब दहाड़े तो आज पूरा संसार बाबा साहब का जय जयकार कर रहा है। बुद्ध ने अपने ज्ञान को बांटा तो आज पूरा विश्व बुद्ध की शरण में जा रहा है। तो वो शक्ति आप में, मुझ में, हम सब में है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू वेरी मच।